Good morning, class. So, today again continuing with the same topic, the chemical coordination and integration, that how our body is dependent upon the endocrine system and nervous system for the various coordination. And if any of these two systems goes wrong, if there is any problem in the two system, then there will be a disbalance in the coordination in our body. So then we also talked about the differences that the nervous system and endocrine system have in terms of their action. So as nervous system generates the impulse, that is an electric impulse, that's why it is a very quick response. And endocrines are ductless glands, and they are secreting the hormones, that is the secretion that the endocrine secrete is called as hormones, and these hormones are the chemical messengers, and these are a little slower in terms of action. But talking about their lastivity or their longevity, how long they persist, so in that sense nervous system is little bit lacking in that, because जो nervous system का electrical impulse होती है, that is lasting for a very less time, and the response get disappears once it is coming in action. But जो इसका response होता है द एंडोक्राइन सिस्टम का बाय थ्रू द हॉर्मोन्स, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. सो द डिफरेंस इज के नर्वस सिस्टम में जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है. एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, द रिवर्सिंग इज देयर, जो एक्शन होता है बाय द हॉर्मोन्स, इट इज़ ऑफ comparatively more slower and also takes longer time to generate, but बहुत ज़्यादा टाइम के लिए persist करता है. So that's why we are considering here the endocrine system first, and then after that we'll be talking about the nervous system. So we have talked about 5 glands in the previous class, and how the secretions of hormones, if they are secreted in higher amount or if they are secreted in lesser amount, then both can be a problematic condition for us. So we talked about the thyroid gland, the enzymes released by the thyroid gland. If thyroid gland releases hormones in excess, then the condition that is hyperthyroidism, and how it affects the individuals. In children the disease is different, in adults the disease was different one. Then we also talked about the hypothalamus, the pineal gland, and how hypothalamus is regulating all the other glands in our body. So pineal gland was secreting a hormone, that was the melanocyte secreting hormone, and that was controlling the sleep cycle in our body, the sleep and awake cycle. So all these things we discussed in the previous class. We also talked about the parathyroid gland, that was the last gland that we discussed, and it was 4 in number, and it was present back of the thyroid gland. So parathyroid gland का main function जो था, that was related to the hypersecretion of calcium, and therefore it was directly or indirectly related to uh, the bones, as calcium is present in the highest amount in our bones, and if the calcium will hypercalcification condition will be there, so जो bones होंगी, that will start to become porous. So all this we discussed in the previous class. Now we'll be talking about a new gland, the thymus gland. So the thymus gland, if we talk about its structure, it is lobular, means having lobes in it, and it is located on the dorsal side of the heart and the aorta. So we have already done the circulatory system, the cardiovascular system. So that's why now we know where the position of the heart and aorta is. So now you can imagine that where this thymus is located. The thymus also plays a very major role in the development of the immune system. So our immune system is directly dependent on the thymus gland, and the immune system is also a very important system for our body, because it is the body's defense system, and it maintains the condition, that is a proper healthy condition in our body, and fights with any antigens or any diseases that enters in our body. Then the second point is, this gland secretes, which gland? The thymus gland. It secretes the peptide hormones. What are these called? The thymosins. So the peptide hormones means जो उनका nature है hormones का, that are being secreted by the thymus gland, they are proteinaceous in nature. That's why peptide hormones. And the term given to these secretions is thymosins. And thymosins also play a very major role in the differentiation of thymocytes.
So it is misprinted. It is written thymocytes, but the correct thing is thymocytes. So thymocytes are the cells that are present in the thymus gland, and these provide the cell-mediated immunity. There are two types of immunity. So one among those, one is cell-mediated. And in addition to this, thymosins also promote production of antibodies to provide humoral immunity. तो दो टाइप की immunities कौन सी है? एक cell mediated जो कि हमारी डिफरेंट सेल्स मिलके बनाती हैं, और दूसरी वाली है ह्यूमोरल जो कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, दैट इज़ द लिम्फ एंड ब्लड, वो कंबाइन होके मिला बनाते हैं. सो both of these immunities are indirectly or directly dependent upon the secretions of the thymus gland, that is the thymosins. The third point is thymus is degenerated in all individuals, resulting in a decreased production of thymosins. So we have seen that as the person grows older and older, जो उनकी immune system है वो weak होता जाता है. The reason for this is जो thymus gland होता है वो as we grow older वो degenerate होता जाता है with the due course of time, और जो thymosin secretions है वो भी कम हो जाते हैं. As a result, the immune responses of old persons becomes very weak. That's why in the very young children, like less than the age of 5, they also have a weak immune system, and after the age of 60 or 65 the immune system gets weaker, and this is the reason for that. Now the structure of the thymus gland. This is the lobes present. These are the this is the right lobe and the left lobe. So this is the lobular structure, and where it is present, see this is the heart and it is present here. So it is very much clearly picturized the position where the thymus gland can be expected to be present. Then comes the adrenal gland. So adrenal gland is basically related with the kidneys. So our body has one pair of adrenal glands. One pair means there are two adrenal glands. One at the anterior part of each kidney, that is at the front part of kidney. जो kidney का ऊपर वाला area होता है, वहाँ पे हम we can expect to find the adrenal glands, and this gland is composed of two types of tissues. The central located tissue is called as adrenal medulla, and outside that lies the adrenal cortex. So जो kidney है हमारी वो दो adrenal के जो parts हैं उसमें divide होती है because of the presence of different types of tissues. जो the part which is located in the central position, that is called the adrenal medulla, और जो outer of the kidneys में present होता है और at the periphery of the kidney, that is called as adrenal cortex. तो अब ये दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये दोनों भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. सो द एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट करता है टू हार्मोन्स दैट आर कॉल्ड एज एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस because their nature is of catechol nature, because they are steroids, so therefore it is called as catecholamines. And your adrenaline, epinephrine or norepinephrine जो hormones हैं, these are also called as the emergency hormones because these are released at the time of an emergency. That is also called as a 3F hormone because they are released at the time of fight, flight and fear. Then adrenaline or non-adrenaline are rapidly secreted in response to any stress of any kind of emergency situations, and that's why called as emergency hormones. So I told you this. Then these hormones, what are the characteristics of hormones? जब हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी में जो कंडीशंस डेवलप होती हैं, these are increase alertness, we become a little more alert. जो हमारा पल्पिलरी प्यूपिलरी डायलेशन है, द आइज में जो प्यूपिल होती है उसका डायलेशन होने लगता है. देन द पाइलो इरेक्शन और द रेजिंग ऑफ हेयर्स. तो जो हमारे हैंड एंड लेग्स पे जो हेयर्स होते हैं, माइन्यूट हेयर्स, दे स्टार्ट टू रेज in from their position, and that in the common language are called as goosebumps. And sweating जो होती है हमारी वो बॉडी में बढ़ जाती है. So both the hormones, they are increasing the heartbeat, they are the strength of the heart contraction and the rate of respiration. ये सब कंडीशन जब बढ़ती हैं तो ये किस चीज़ का एक्शन होता है? दैट नाउ वी नो दैट जो हमारी बॉडी में एड्रीनालिन रिलीज हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनालिन रश. नाउ द कैटेकोलामाइंस also stimulate. I told you these hormones are catecholamines. So what can the catecholamines do? They can stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood, and they also stimulate the breakdown of lipids and proteins. So catecholamine जो नेचर है इनका, वो क्या स्टिमुलेट कर सकता है? ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करेगा, और ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज. तो अगर
कैटिकोलामाइंस जो हैं एड्रीनलिन जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको ब्रेक करते हैं, और देन दे दिस वे द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इंक्रीजेस, एंड दे कैन ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अगर प्रोटीन्स ब्रेक होंगे तो अमीनो एसिड्स मिलेगा, एंड लिपिड्स ब्रेक होंगे तो वील गेट सिंपलर फैट्स. सो द एड्रीनल, अब हम कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे. द एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि पेरिफेरी रीजन पे प्रेजेंट होता है किडनी की, ये अगेन 3 लेयर्स में डिवाइड हो सकता है, कॉल्ड एज द इनरमोस्ट लेयर विच इज zona reticularis, zona fasciculata which is the middle layer, and zona glomerulosa, this is the outer layer. So the adrenal cortex secretes many hormones and they are called as commonly corticoids. तो वो जो secrete करते थे उनको कैटिकोलामाइंस बोलते थे, और ये जो commonly hormones released by the adrenal cortex are called as corticoids. The corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called as glucocorticoids. अब the nature of compound they are मेटाबोलाइजिंग, तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर रहे हैं तो वो कॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलर कॉर्टिकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बिकॉज ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर द कॉर्टिकॉइड्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो इन आवर बॉडी द कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट इज द मेन टाइप ऑफ glucocorticoid, and that's why it is mainly present whenever we need the breakdown of glucose. Corticoids regulate the balance of water and electrolytes, और ऐसे corticoids जो balance of water और electrolytes का balance maintain करते हैं, these are called as mineralocorticoids. Now aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. तो main glucocorticoid कौन था the cortisol, and the aldosterone which is the main mineralocorticoid, और ये इसका फंक्शन क्या था, टू रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली. सो व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? देन जो सेकंड थिंग है, दे व्हाट दे स्टिमुलेट इज द लिपोलिसिस. देन द थर्ड थिंग दे डू इज प्रोटियोलिसिस. सो ये लिसिस वर्ड जब भी यहाँ यूज होगा, दैट मीन्स दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, here the process of something breaking down is happening. That's why अगर lipolysis हो रहा होगा तो वहाँ पे lipids break down हो रहे होंगे, and अगर proteolysis हो रहा होगा तो वहाँ there will be the breakdown of proteins. And glucogenesis में क्या होता है, metabolic जो breakdown होता है that is of the non carbohydrate precursors. जो भी ऐसे products हमारी body में present होते हैं that are नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, मतलब जहाँ से जो हमें ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बट दीज आर नॉट द डेरिवेटिव्स ऑफ द शुगर्स. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. देन दे इनहिबिट, अब जो दूसरा फंक्शन होता है एल्डोस्टेरोन का, वो क्या होता है, दे इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है जहाँ पे हमें बॉडी में हमारी फैट की ज़्यादा ज़रूरत है, अमीनो एसिड की ज़्यादा ज़रूरत है, और ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी में जो रिलीज़ होता है दैट इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. तो हमारी बॉडी अपने आप ही इसका सिक्रीशन और ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है. और इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो अमीनो एसिड ब्रेकडाउन ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं उनका यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये ज़्यादातर कंडीशन तब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस से पास ऑन हो रही हो. देन कॉर्टिसोल क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ द किडनी. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं द विच आर द पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल की अगर हम बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस डेवलप करते हैं. सो दे सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, एंड जो कॉर्टिसोल होते हैं दे स्टिमुलेट्स द आरपीसी प्रोडक्शन. तो अगर हमारी वी ऑल नो कि जो अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में WBCs डेवलप हो जाते हैं दैन दे कैन ऑल्सो टर्न टू कैंसरस. दैट्स वाई जो कॉर्टिसोल होता है वो हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करता है, WBCs को ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने देता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है, RBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है. तो दैट्स वाई मेंटेनिंग द नॉर्मल लेवल ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स is also a function of the glucocorticoids, particularly the cortisol. Then aldosterone वो क्या करता है, it acts mainly at the renal tubules and it stimulates the
ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल आर्टरीज है, ये सब विल बी टॉकिंग अबाउट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट अभी के लिए यू शुड नो कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द ट्यूब्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द किडनी एंड दे आर रिलेटेड फॉर पासिंग ऑन the filtered products from itself to the outside of the body. So that's why जो एल्डोस्टेरोन होता है वो डायरेक्ट रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वो स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन. तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है और कैल्शियम वी हैव टू एक्सक्रीट आउट और फॉस्फेट आयंस. तो ये जो इसका फंक्शन होता है एल्डोस्टेरोन का, इट इज़ मेनली फॉर रीअब्जॉर्बिंग द water and the sodium ions and excretion of the potassium and the phosphate ions. So therefore जो aldosterone है, it helps in maintaining the electrolyte balance, the body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. These are the various functions of the aldosterone. तो अगर हमारी बॉडी में हर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तभी विल बी सेइंग कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर पे प्रेजेंट है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है दैट इज़ बीइंग मेंटेन. जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं, दे आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और क्या सिक्रेट करता है? सम एड्रिनोजेनिक स्टेरॉइड्स एंड दे प्ले द रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी के टाइम पे जो एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं दैट आर ऑल्सो लीड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायग्राम, दिस इज हाउ द where the presence of adrenal glands is can be seen on the uppermost position of the kidney. And then again अगर हम इसको section cutting करेंगे तो we can see कि ये again divided है two parts में, the adrenal cortex that represent in the periphery और बीच में adrenal medulla. Now the pancreas. What are pancreas? So in the very first class of this chapter I told you that there are some mixed glands present which have both the endocrine and exocrine part. So the best example for those glands can be pancreas. Pancreas is a composite gland which acts both as the exo as well as the endocrine gland. जो endocrine pancreas हैं, they consist of islets of Langerhans. So exocrine part में ये जो इनका islets of Langerhans part होता है, that is completely absent, but it is a part of the endocrine pancreas. So there are about 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, and they represent only 1 to 2% of the pancreatic tissue. Now in the diagram you can see what are the different structures that are present. यहाँ से ये small intestine है. From here the pancreas starts. So pancreas are present just below the small intestine. This is the head of pancreas. This is the common bile duct जहाँ से कि bile juices secrete होते हैं. This is the pancreatic duct. These are the lobules. Different क्योंकि pancreas is divided into many lobules. It is a lobular structure. This is the tail where the pancreas is ending, and this is the complete body of pancreas. Now the two types of cells are there in the islets of Langerhans. So endocrine part जो होता है that is composed of islet of Langerhans. और islet of Langerhans again इसमें दो types के cells होते हैं, the alpha and the beta cells. अब alpha and beta cells again ये दो different types के hormones को secrete करते हैं. तो alpha cells they secrete a hormone that is called as glucagon, while the beta cells they secrete insulin. So glucagon is a peptide hormone. Peptide hormone means it is having a proteinaceous nature, और जो बीटा cells हैं they secrete insulin. तो glucagon is a peptide hormone and it plays a role in maintaining the normal blood glucose level. Glucagon and insulin are working as antagonistic hormones because जो glucagon है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, and जो insulin है it decreases the amount of glucose in our body. That's why they are working antagonistically, that is opposite to each other. Glucagon acts mainly on the liver cells. What are the liver cells called? The hepatocytes. तो glucagon जो होता है वो mainly liver cells पे act करता है और stimulate करता है glycogenolysis, resulting अगर glycogenolysis होगा that means the breakdown of glycogen, और glycogen break होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. that this is how our blood sugar, जो हमारे blood में ग्लूकोज का concentration है वो बढ़ जाएगा, and our body will lead to a stage of hyperglycemia. फिर in addition this hormone also stimulate the process of gluconeogenesis. फिर gluconeogenesis जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं उनके ब्रेकडाउन से जो हमें डिफरेंट बॉडीज़ मिलती हैं लाइक द कीटोन बॉडीज़ एंड ऑल, ये तभी मिलती हैं व्हेन वी आर ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशंस में जब हम होते हैं. तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन करने लगती है जिससे हमें एनर्जी मिल सके. तो ये भी स्टार्ट हो जाता है अगर हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है.
तो हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो अगेन और बढ़ जाती है. फिर ग्लूकागॉन और क्या करता है, इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. दस ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. तो ये जो सेल्स का है, इनमें जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज अपटेक है उसको कम कर देता है. अब जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा क्योंकि उसको सेल्स अपटेक नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई जो हमारे ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बढ़ती जाती है. हाइपर मीन्स मोर एंड ग्लाइसेमिक मीन्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज इंक्रीजिंग and it is not being uptaken by the cells at as much as it should be taken in. तो इंसुलिन फिर इट कम्स इन एक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लूकागॉन. तो इंसुलिन ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन. इट प्लेज रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हीमोस्टासिस. तो हीमोस्टासिस मीन्स ग्लूकोज का नॉर्मल कंसनट्रेशन मेंटेन करना हमारे ब्लड में. तो वो काम है इंसुलिन का. तो ग्लूकागॉन बढ़ाता है तो इंसुलिन कम करेगा. एंड इंसुलिन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट क्या होते हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, मेनली द फैट टिश्यूज जो होते हैं उन पे काम करता है और ये एनहांस करता है सेलुलर अपटेक का. अब हमारे सेल्स जो हैं हेपेटोसाइट्स, वो सेल्स जो हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, उनको अपटेक करने लगते हैं. तो हमारी ब्लड में जो है शुगर लेवल वो कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. सो दैट इज हाउ दे आर वर्किंग opposite to each other. Now as a result there is a rapid movement of glucose from blood to the hepatocytes and the adipocytes and resulting in decreased blood glucose levels. तो यहाँ पे hypoglycemia condition आ जाएगी. Hypo means decreased amount of sugar in our body. Insulin also stimulates the conversion of glucose to glycogen. अब glucose जब glycogen में convert होगा तो glycogen is the product जो हमारी body easily utilize नहीं कर पाती है. Glucose is the smallest amount of carbohydrate unit that our body is using. glycogen नहीं यूज़ करती है, इसलिए जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा that is the glycogenesis. genesis means making up of something or building something. तो अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम होता जाएगा. Glucose hemostasis in body is thus maintained jointly by the two insulin and glucagons. तो अब दोनों मिलके इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, एक बढ़ाता है और एक कम करता है. प्रोलोंग हाइपरग्लाइसीमिया अगर मतलब प्रोलोंग हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स अगर हमारी बॉडी बहुत देर तक हाई ब्लड शुगर लेवल पे रहती है तो इट कुड लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर दैट वी कॉल्ड एज द डायबिटीज मेलाइटिस और द टाइप 2 डायबिटीज. It is also associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds called the ketone bodies. तो हमारी बॉडी में हार्मफुल कंपाउंड बनने लगते हैं अगर हमारी बॉडी बहुत देर तक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में रहती है. एंड दैट्सफॉर जो कीटोन बॉडीज़ हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी वो हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड डायबिटिक पेशेंट्स can be successfully treated with the insulin therapy because insulin will ultimately decrease the amount of the sugar in our body. Now the gonads. So testes and ovaries are the two types of gonads. So testes are present in males and ovaries in females. So a pair of testes is present in the scrotal sac that is outside the abdomen of male individuals. Now testes perform dual functions as a primary sex organ as well as in the endocrine gland also. So dual function means ये दो जगह पे अपना function provide कर रहे हैं. Then testes is composed of seminiferous tubules and stomal or interstitial tissues. तो जो testes है वो again बहुत सारे simple primary tubules का बना होता है that are called as the seminiferous tubules and all these seminiferous tubules combine together to form a testes. These are also called as the interstitial tissue. The Leydig cell or the interstitial tissues जो cells होते हैं they are present in the intertubular spaces and they produce a hormones called androgens. And what androgens are mainly produced in the males? The testosterone. So testosterone is a type of male hormone that is a part of the androgen only. Androgen का क्या function होता है? It regulates the development, maturation and functions of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland and the urethra. All these things are being maintained by the by the androgens that are particularly the testosterone, and they maintain the maturation and functions of all the male sex organs. Now the hormones stimulate muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice etc. ये सब जो है हमारी बॉडी में मेल्स बॉडी में ये सब जो होता है that are by the effect of the testosterone hormones only. Now androgens also play a stimulatory role in the process of spermatogenesis. तो spermatozoa का जो formation होता है and ultimately which leads to the formation of sperms ये भी androgens के
इन्फ्लुएंस के अंदर ही होता है. एंड्रोजेंस एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्स बिहेवियर. These hormones, the testosterone, produce anabolic, that is the synthetic effects on the protein and carbohydrate metabolism. तो ये भी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं, and that's why they also provide energy in some or the other form. This is the diagram. ये testes हैं and they are made up of seminiferous tubules. This is the reed testes, then this is the tube one, that is the epididymis. This is the efferent duct, the deferent duct, and the blood vessels. This is the complete picture how the testes looks like. Now the ovary or the gonad in females. Females have a pair of ovaries, means there are two ovaries in females, and where they are located in the abdomen position. So ovary is the primary female sex organ. It produces one ovum during each menstrual cycle. तो each menstrual cycle में जो हमारी ovary होती है वो एक ovum produce करती है. In addition to that, ovary also produces two groups of steroid hormones. कौन से hormone produce करती है ovary? The estrogen and the progesterone. और वो कौन से hormone produce कर रहा था testes? The testosterone. So ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues. वहाँ पे seminiferous tubules थे, अब ovary में ovarian follicles और stromal tissues हैं. Estrogen जो होता है वो synthesize और secrete होता है mainly by the growing of ovarian follicles. जैसे जैसे ovarian follicles grow होते हैं ovary में, वैसे वैसे estrogen का synthesis ज़्यादा होता जाता है. आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब जब जो रप्चरिंग होता है फॉलिकल का वो हो गया है और ओवम हैज़ बीन सिक्रेटेड आउट, तो ये जो होता है स्ट्रक्चर वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट द प्रोजेस्ट्रॉन. पहले ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है और वंस ओव्यूलेशन हैज़ अकर्ड तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हमारे फीमेल्स की बॉडी में बढ़ जाता है. Estrogens produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of the growing ovarian follicles, appearance of female secondary sexual characters, that is high-pitched voice, mammary gland development. ये सब जो female secondary sex organs होते हैं इनका जो development होता है that is under the influence of estrogens, और male secondary sex hormones का और structures का जो development हो रहा था that was under the influence of testosterone. Estrogens और क्या करते हैं? They regulate the female sexual behavior. Progesterone supports pregnancy. Progesterone also acts on the mammary glands and they secrete the formation of alveoli. What are alveoli? The sac-like structures in the alveoli you must have also studied in the lungs, but these are similar structure, but these are present in the mammary glands. So that's why the term again alveoli is given, and they are sac-like structures that store milk, and then milk secretion is also done under the influence of progesterone. This is the picture of ovary, how it look like and what are the different parts of an ovary. Ovary and all this thing you will be learning in detail in the third chapter of 12th class, that is reproductive system in humans. So this is just an idea how the human it looks like the ovary of an adult female. Now hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract, all this we'll be doing in the next class. So for now this much is enough, and about the mechanism and different hormones that are related to the heart and kidney, that we'll be doing in the next section of our chapter. So this is enough for today.